Hello students, this is our fourth lecture of Ionic Equilibria. In last lecture, we have seen about the auto-ionization of water and the relation in between pH and pOH. Correct? In auto-ionization of water, we have seen about the ionization itself. Water is itself undergo ionization and produce H3O positive ion and OH minus ion. One is cation and another one is anion. So on the basis of that, we have determined the value of Kw. Kw is the ionic product of water, and its value is 1 into 10 to the power minus 14. By using this value and by using this equation, we have to determine the relation in between pH and pOH, and the relation is pH, that means potential of hydrogen, plus pOH, that means potential of hydroxide, is equal to 14. Okay, so this is the relation in between pH and pOH. Now, in this lecture, we are going to discuss about the hydrolysis of salt. Hydrolysis of salt. As we know, what is the meaning of salt? Salt, how it will obtain? It is obtained by the reaction in between acids and bases. Correct? Salts are obtained by the reaction in between acids and base. It produce salts. So in general, salt means one is cationic species and another one is anionic species. One is cationic species and another one is anionic species, right? Because as we know, salt contain one cationic species and another one is anionic species, one positively charged species and another one is negatively charged species. So hydrolysis of salt, what is the meaning? As we know, hydrolysis means breakdown of water, right? And salts means cation and anion species containing compound. So both are the different meanings. Means we can say that if the cation or anion from salt or the ions of salt combines with H plus and OH minus ions of water, then it is called as the hydrolysis of salt. Understand? See, hydrolysis means breakdown of water, and as we know, water produces H plus and OH minus ion. We already discussed that. H plus and OH minus ions. That means water having ions H plus and OH minus ion, and salts also contain cation and anion. So what is the meaning of hydrolysis? The ions of salt. Which ions? Cation or anion? One of the ion or both ion? If they are combined with H plus and OH minus ions from water, then this process is called as the hydrolysis of salt. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा what is the meaning of hydrolysis of salt. If both ions combines with ions of water, then it is very good. Okay, it is complete hydrolysis. If one of the ions combines with ions of water, that is also good. But sometimes not any ion from salt, cation भी नहीं, anion भी नहीं, combine नहीं होते water के ions के साथ, then at that time we can say there is no hydrolysis takes place. Okay, so
as we know, uh, salts are obtained by using acids and bases, right? So there are different types of acids and bases. We already discussed uh, in lecture number 1, right? In this chapter, some acids are strong acids, some acids are weak acids. Similarly, some bases are strong bases, and some bases are weak bases, right? So on the basis of that, strong acids and weak acids, strong bases and weak bases, there are 4 types of salts are obtained. Okay, 4 types of salts are obtained. Now the first salt is which are derived from strong acid and strong base. मतलब क्या है? In that case, both components of salts are occur from strong acid and strong bases. Means whenever strong acid and strong bases are react together, we get one of the salt like NaCl, sodium sulfate, KCl, that means potassium chloride, potassium nitrate, sodium nitrate. In that case, for example in NaCl, NaCl में Na कहाँ से आया है? From NaOH. NaOH is the strong base, right? Cl from hydrochloric acid, that means HCl, and HCl is a strong acid. So salts, this is called as the NaCl, and which is derived from the strong base NaOH and strong acid HCl. Similarly, all these are. Okay, so that's why this is the first type of salt, that means salt of strong acid and strong base. Second one is the salts derived from strong acid and weak base. Means in this type, the part of acid is strong and the part of base is weak. For example, NH4Cl, CuSO4, ammonium nitrate, NH4NO3, CuCl2, cupric chloride. In that case, consider this ammonium chloride. Ammonium, that means NH4 is the part of base, right? And ammonium from ammonia. So ammonia or ammonium is a weak base, and Cl minus is from HCl, hydrochloric acid. And as we know, hydrochloric acid is the strong acid. So this example means ammonium chloride is the example of salt which is derived from strong acid and weak base. Similarly, all these are CuSO4, ammonium nitrate, and as well as CuCl2. Okay, in CuSO4, sulfuric acid from sulfate ion from sulfuric acid, that is strongest acid, and Cu आया होगा COH by 2, cuprous hydroxide, copper hydroxide first hydroxide. So copper hydroxide is a weak base. Similarly in CuCl2 and ammonium nitrate also. Now the third type of salt is salts derived from weak acid and strong base. That means in above case, in second case, strong acid था और weak base था. अब इसका एकदम opposite. अब यहाँ पे है weak acid and strong base. So here the acidic part of ion is from weak acid and the base का जो रहेगा वो strong base का part रहेगा. For example, this sodium acetate, potassium cyanide, sodium carbonate. Here CH3COONA. CH3COOH means this part is from acetic acid, CH3COOH, and CH3COOH is a weak acid, and this sodium from NaOH, that means from strong base. So this sodium acetate is the combination of weak acid and strong base. Potassium cyanide, KOH, potassium from KOH, CN from HCN, hydrogen cyanide or hydrocyanic acid. KOH, that is potassium hydroxide, strong base, weak acid. Here also H2CO3 acid का part होगा, that means carbonic acid, and Na from NaOH, strong base and weak acid. Okay,
So these are the some examples of salts derived from the weak acid and strong base. And last one is salts derived from weak acid and weak base. Is in that case, both components are from weak acid and weak bases. For example, this ammonium acetate, ammonium cyanide, ammonium acetate, this acetate ion is this acetate part CH3COO part from acetic acid जो कि weak acid है, and ammonium part from ammonium hydroxide जो कि weak base है. So this is the salts from weak acid and weak base. Both are the weak in nature. Here also in ammonium cyanide, ammonium hydroxide आया होगा, ammonium आया होगा from ammonium hydroxide and CN from hydrogen cyanide or hydrocyanic acid. Both are the weak acid and weak bases. So that's why this is the salt derived from the weak acid and weak bases. Now out of these four, listen carefully. Out of these four types of salts, the first type, that means salt of strong acid and strong bases, does not show any hydrolysis. मतलब ये कोई hydrolysis show नहीं करता है, ठीक है, no hydrolysis. And these three shows hydrolysis. Okay. फर्स्ट वन इज दैट मीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ये जो कॉम्बिनेशन है सॉल्ट्स का, ये हाइड्रोलिसिस को शो नहीं करता है. अब क्यों नहीं करता है, व्हाट इज द रीजन, ये हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे. एंड दिस थ्री आर, दैट मीन्स salts from weak acid and weak strong acid and weak base. So third one is weak acid and strong base ka salt, and the salts of weak acid and weak base, all three shows hydrolysis. Now one thing should be remember, if one of the part of salt is weak, okay, listen carefully, one of the part of salt is weak, then these weak part is combined with water and shows hydrolysis. ठीक है, मतलब जो वीक पार्ट रहेगा सॉल्ट का, वो क्या करता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है एंड प्रोड्यूस, वाटर के साथ रिएक्शन करके वहां पे हाइड्रोलिसिस शो करता है. सो कौन सा पार्ट, वीक पार्ट. अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे स्लाइड बाय स्लाइड एग्जांपल लेके, तब इजीली समझ में आ जाएगा. बट ये जो मैं थिंग्स बता रही हूँ, दैट शुड बी रिमेंबर दैट. ओके, नाउ सी weak part, okay, listen carefully, weak part of salt क्या करता है, combine with the ions of water and shows hydrolysis. That means we can say that जितना ज्यादा weak component होगा salt में, उतना ज्यादा hydrolysis होगा, बराबर ना. जितना ज्यादा weak component होगा salt में, उतना ज्यादा hydrolysis होगा. That means we can say that in three cases, most weak part कहाँ पे है, in last case. That means this shows more hydrolysis comparatively than other. Okay, so this is the some introductory part of this hydrolysis of salt. हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, समझ में आया ना. क्या होता है हाइड्रोलिसिस, द आयंस ऑफ सॉल्ट combines with the ions of water shows hydrolysis. So how will you define that, कैसे define करोगे, when the salts is dissolved in water, it dissociates completely into its constituent ions, right? Which ions, one H3O positive ion and another one is OH minus ion. We already discussed this before in lecture number 3, that is called as the auto-ionization of water. Na? This reaction shows the auto-ionization of water, correct? So
It produces H3O positive and OH minus ion. That means these are the ions of water. In pure water, the concentration of this H3O positive and the concentration of OH minus ion remains same. अगर ये concentration same है दोनों ions का है H3O positive और H plus both are same. You can say H3O positive also H plus ion. कुछ भी बोल सकते हो. Meaning is same. If the concentration of this hydronium ion and the concentration of this hydroxide anion is same, that means this water, this pure water is called as the neutral water, right? जब ये concentration same रहेगा, वो केस में हम लोग pure water को बोलेंगे this is called as the neutral water. But if one of the ion, if one or more, one or both, if the ions of salt do not react with the water, ठीक है? If ions of salt do not react with water, मतलब अगर salt के ions water के साथ react ही नहीं कर रहे, तो वहां पे concentration of this hydronium और concentration of OH minus ion पे कुछ changes आएंगे का? आएंगे? नहीं आएंगे ना? Both are remain same. That means we can say that if ions of salt do not react with the water, then the concentration of hydronium ion and the concentration of OH minus ion remain same, remain equal, and hence the solution is neutral, right? मतलब if कोई भी ions of salt, no one, कुछ भी रिएक्शन नहीं होती है ions of water के साथ, तो वहां पे concentration of hydronium ion and concentration of OH minus ion does not change. और अगर चेंज ही नहीं हो रही तो प्योर वाटर क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, बराबर. बट इफ वन और मोर आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट्स विथ वाटर, एक या एक से ज्यादा कोई भी आयंस अगर वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं, then the concentration of hydronium ion is not equal to the concentration of hydroxide ion. That means concentration of H3O positive and OH minus ion not remain equal. अगर ये change होता है, that means we can say that then the solution become acidic or basidic, depend on the type of salt. Yes, what do you mean that? If one or more ion of salt if it is reacts with the water, then the concentration of hydronium ion and the concentration of OH minus ion become change. अब जो ज्यादा change होगा, जिसका ज्यादा concentration होगा, on the basis of that solution की pH बनेगी. अगर hydronium ion concentration ज्यादा है, then the solution become acidic in nature. And if the concentration of hydroxide ion is more in a solution, then the solution become basic in nature. Depend on what? Depend on the type of salts. Which type of salt is there? On the basis of that, the basicity and the acidity of solution depend. Okay. So, on the basis of that, we can define the hydrolysis of salt. How to define that? Hydrolysis of salt is defined as reaction in which cation and anion or both the ions of salt. Cation and anion or the both ions of salt reacts with ions of water to produce acidity or alkalinity. Acidity or basicity. Acidity और alkalinity. Alkalinity मतलब बेस के लिए बोला जाता है. Alkali बोलते हैं ना उसको. तो alkalinity मतलब बेस. तो what is the definition of hydrolysis? Simple. जैसे कि मैंने आपको बताया, the reaction in which, किसके बीच की reaction? Cation and anion. कहाँ के? From salts. एक तो cation या तो फिर anion और both cation and both anion reacts with ions of water. वाटर के आयंस का तो रिएक्शन करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक तो एसिडिटी प्रोड्यूस करेंगे या तो फिर अल्कलिनिटी प्रोड्यूस करेंगे. एंड दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. अंडरस्टूड? आई होप समझ में आया होगा सबको. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट. अभी हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट को एक्सप्लेन करते and देखते हैं कि whether it shows the hydrolysis or not.
सम इंट्रोडक्टरी थिंग्स तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दी है कि क्या कौन हाइड्रोलिसिस कौन शो करता है, कौन सा टाइप ऑफ आयन अगर प्रोड्यूस होता है एसिड सॉल्ट में तो वो हाइड्रोलिसिस शो करता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और उसी थिंग्स को, उसी ट्रिक्स को अभी अपने को यूज करके देखना है whether it shows the hydrolysis or not. Okay, now first one is salt of strong acid and strong bases. See, as you can see on screen, salt of strong acid and strong base का example NaCl, KCl, right? So जो common example है generally NaCl, we are already used NaCl and we are all familiar about the NaCl because NaCl is also called as the common salt, right? And common salt हम लोग घर पे भी use करते और number of रोज use करते, बराबर ना? Now listen, अगर आप लोग NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो, घर पे तो नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे करते हैं ना, नींबू शरबत करते समय भी बहुत बार यूज करते हैं उसको। सो NaCl को डाल दो वाटर में, अगर बोला क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व होता है दैट मीन्स क्या, वो आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नाउ सी, NaCl is a NaCl is a salt of strong acid. Which acid? HCl. Cl कहाँ से आया होगा? From the hydrochloric acid. And strong base, that means NaOH. ये दोनों की रिएक्शन हुई होगी तो ही NaCl तैयार हुआ ना, that means न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होके ही HCl और NaOH produce NaCl. Now whenever this NaCl is added in a water, it dissociates completely because it is strong electrolyte. We already learned that, right? In lecture number 1 or 2, NaCl is a strong electrolyte, so it dissociates completely into its ions, right? And it is dissolved in the water. So see the reaction, NaCl in aqueous media produces Na plus and Cl minus ion. Matlab this is cation and this is anion, right? If this cation and anions reacts with water, तो क्या होगा, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोनियम और OH माइनस आयन का चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज होता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, और अगर वो चेंज नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोलिसिस नॉट टेक्स प्लेस। ओके, नाउ these ions of salt, that means Na plus and Cl minus ion, अगर हम लोग इसको बोले कि वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करो, सो पॉसिबल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, मैं लिख के बताती हूँ आप लोगों को कि पॉसिबल रिएक्शन क्या होनी चाहिए। दिस रिएक्शन ना, ये Na प्लस हो गया, ये Cl माइनस आयन हो गया फ्रॉम दिस रिएक्शन। अब उसको वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करना है। वाटर के आयंस मतलब कौन, एक होगा H प्लस और दूसरा होगा OH माइनस। तो कैटायन किसके साथ रिएक्ट होगा, एनायन के साथ। एनायन किसके साथ रिएक्ट होगा, कैटायन के साथ फ्रॉम वाटर। सो Na प्लस किसके साथ जाना चाहिए, विथ OH माइनस आयन, सो प्रोड्यूस NaOH, राइट, हो गया प्रोड्यूस NaOH। एंड Cl माइनस आयन किसके साथ जाना चाहिए, H प्लस के साथ, सो इट प्रोड्यूस HCl. Now these are the possible products, these are the possible reaction whenever Na plus and Cl minus ion reacts with the H plus and OH minus ions from water. Is it? So हो गया ना, यहाँ पे एसिड भी तैयार हो गया, बेस भी तैयार हो गया, HCl भी तैयार हो गया, NaOH भी तैयार हो गया। मतलब आप जो घर में वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करते हो, ठीक है, वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करते हो, तो वहां पे क्या HCl तैयार होता है या NaOH तैयार होता है जो हम लोग पीते हैं इन द फॉर्म ऑफ नींबू शरबत और अदर ऑफ दिस? नो, वहां पे HCl और NaOH कुछ भी नहीं तैयार होता है। क्यों नहीं होता है? नाउ सी हियर, whenever this Na possible reaction तो ऐसी ही होनी चाहिए, but whenever this Na plus and OH minus ion combine, it produce NaOH, and as we know this NaOH is a strong base, right? This NaOH is a strong base. Similarly, H plus and Cl minus ion are form HCl, and hydrochloric acid is the strongest acid, and as we know strong acid, strong bases having a tendency to dissociate, right?
मतलब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है ना, ये फिर से बैकवर्ड हो जाती है, बिकॉज दिस आर दी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी जाती है उससे ज्यादा ये बैकवर्ड रिएक्शन होती है, एंड कन्वर्ट दिस HCl in the form of H plus and Cl minus ion, and NaOH produce Na plus and OH minus ion। मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा ही नहीं रही है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस HCl and NaOH जो कि प्रोड्यूस हुआ है इन द केमिकल रिएक्शन। Both are strong acid and strong bases, and as we know, strong acid and strong bases are undergo 100% dissociation। Means जैसे ये फॉर्म होता है HCl, वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से H प्लस और Cl माइनस आयन में। जैसे NaOH तैयार होता है वैसे वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एंड OH माइनस आयन में। So whether here hydrolysis takes place, whether these ions of Na plus and Cl minus and reacts with the ions of water? No, it doesn't react with the ions of water। और अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं हो रहे तो हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा। तो हाइड्रोलिसिस अगर नहीं हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O positive and the concentration of OH minus and remain same। Remain same means the pH of solution decrease, remain neutral, the nature of solution remain neutral। Now see the next reaction। In that case, this HCl and NaOH aqueous media, that means water is there, ठीक है। And as we know, strong acid and strong bases are dissociates completely। So ये क्या करेगा, ये H कहाँ पे चला जाएगा, it produce hydronium ion, बराबर, and Cl minus ion, बन गया ये Cl minus ion, okay। And here this produce Na plus and OH minus ion। हो गया डिसोसिएशन फिर से। मतलब ये वाली रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड वे वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट रिमेन सेम। ओनली डिफरेंस क्या, यहाँ पे H2 यहाँ पे H3O पॉजिटिव है और ये OH माइनस आयन है। ये दोनों मिलके क्या तैयार करते हैं, वाटर ही तैयार करते हैं ना। मतलब दिस रिएक्टेंट साइड एंड दिस प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इन फॉर्म, राइट। सो वो अगर इक्वल फॉर्म में है तो वहां पे कोई रिएक्शन हो रही है क्या, कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रही। और रिएक्शन ही नहीं हो रही, और मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा है। Thus the reactant and the products are same। This shows that neither cation nor anion of salt reacts with water। Hence अगर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो concentration of hydronium ion and the concentration of OH minus ion is not disturbed। It remain as it is and the solution remain neutral in nature, okay। So by using from this we can conclude that the salt of strong acid and strong bases does not shows hydrolysis। क्यों शो नहीं करती है, because both components are strong। Na भी strong NaOH से आया हुआ है एंड Cl भी कहाँ से है, strong acid से आया हुआ है। As I told you earlier, वीक अगर कोई पार्ट है तो वो हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। दोनों के दोनों स्ट्रांग है तो वो हाइड्रोलिसिस शो करेंगे ही नहीं, बिकॉज जैसे वो वाटर के आयंस के साथ कंबाइन होंगे वो एक स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस तैयार करेगा, और स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस इजीली डिसोसिएट होते हैं अगर वो वाटर के प्रेजेंस में है तो फिर से डिसोसिएट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और डिसोसिएट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे तो फिर से वो ओरिजिनल स्टेट में आ रहे हैं ना। सो दैट मीन्स देयर इज नो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। In which case, in salts of strong acid and strong base। Now the next one is salts of strong acid and weak base। Now here ये जो salt है ये कहाँ से derive किया गया है, by using the strong acid and weak base। That means acid का part आया होगा from the strong acid and base का part from the strong base। For example, CuSO4। In case of CuSO4, so SO4 is the part of strong acid। Which acid? H2SO4। ये कहाँ से आया होगा, from H2SO4, and Cu from copper hydroxide, that means CuOH by 2, and CuOH by 2 is a weak base। अब एक part weak है, एक part strong है। बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है CuSO4
is from strong acid and strong weak base. सॉरी हाँ, strong acid and weak base मतलब एसिड का पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है. और ये ध्यान में रखना कि पीएच किस पे डिपेंड हो सकती है. तो जिसका पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उस हिसाब से उसकी पीएच रहेगी, उस हिसाब से उसका नेचर रहेगा. तो देखते क्या है. तो ठीक है. नाउ whenever this CuSO4 is added in a water, ओके जैसे हम लोग इसको CuSO4 को डिसॉल्व करते हैं वाटर को, तो बिकॉज ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ दिस सॉल्ट, इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली. उसका डिसोसिएशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 माइनस आयन. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि द आयंस ऑफ सॉल्ट क्या होना चाहिए, रिएक्ट होनी चाहिए, कंबाइन होनी चाहिए किसके साथ, आयंस ऑफ वाटर के साथ. अगर होते हैं तो वो प्रोड्यूस शो करेंगे हाइड्रोलिसिस, नहीं होते तो वो हाइड्रोलिसिस को शो नहीं करेंगे. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है तो वो हाइड्रोलिसिस शो करता है क्या, वो वाटर के साथ कंबाइन होते हैं क्या, नहीं होते. क्योंकि अगर होते भी है तो वो फिर से क्या हो जाते हैं, रिवर्स बैक आके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. बट वीक का ऐसा होता है क्या, नहीं होता है. नाउ सी हियर, the sulfate ion of salt have no tendency to react with the water because of H2SO4 is a strong electrolyte or strong acid. जैसे H2SO4 तैयार होगा वो फिर से रिवर्स आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड SO4 माइनस आयन के साथ. दैट मीन्स ये जो SO4 2 माइनस आयन है, इट डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस. अब बचा कौन है, Cu2 पॉजिटिव आयन, और दिस इज द पार्ट ऑफ वीक बेस. अब वीक बेस से मतलब ये कुछ तो भी क्या शो कर सकता है. अब कैसे करेगा, नाउ the Cu positive ion, the Cu2 positive ion here, 2 positive, the Cu2 positive ion of salt reacts with OH minus ion from water to form unionized CuOH by 2. मतलब क्या है कि whenever this Cu2 positive ion reacts with the water, जैसे वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, it produce CuOH by 2. Okay, copper hydroxide with hydronium ion formation takes place. Now this copper hydroxide is a weak base, and as we know, weak base की टेंडेंसी, वीक कंपोनेंट की टेंडेंसी डिसोसिएशन करने की कितने परसेंट रहती है, मिनिमम 5%. बराबर ना, ये ऑलरेडी देखा है हम लोगों ने, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. दैट मीन्स दिस फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, 99% होगी. एंड बैकवर्ड रिएक्शन म्हणजेच काय, मतलब क्या है कि Cu पॉजिटिव और OH माइनस आयन में कन्वर्ट होने के लिए वो 1% ही पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ऑफ दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. 1% ही पॉसिबिलिटी है बैकवर्ड जाने की रिएक्शन. मतलब क्या है कि this Cu2 positive ion combine with the ion of water and produce CuOH by 2 with the hydronium ion. अब यहाँ पे प्रोडक्ट में H3O पॉजिटिव आयन तैयार हो रहा है, मतलब इन रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीजेस. बराबर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीजेस देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. सो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया कम, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया ज्यादा, और जिसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसके हिसाब से उसकी पीएच बनेगी, उसके हिसाब से उसका नेचर बनेगा. अब ये न्यूट्रल तो नहीं रहेगा बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन हो गए चेंज. सो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, सो दैट्स व्हाई the solution become acidic in nature. That's why this solution become acidic in nature. Okay, ये हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग में भी बता सकते थे कि सॉल्यूशन की पीएच क्या होती होगी इन स्टार्टिंग केस. दैट मीन्स हियर क्या देखना यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स, ओनली यू कैन सी स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है, मतलब सॉल्ट्स को देखना है. जिसका जो पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा उस हिसाब से उसकी नेचर रहेगा, उस हिसाब से उसकी पीएच बनेगी. एंड नाउ हियर यहाँ पे H2SO4 का था सल्फेट आयन, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ. अब जो स्ट्रॉन्ग है वही उस हिसाब से पीएच शो करेगा ना. तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन था यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड. सो एसिड का पार्ट स्ट्रॉन्ग था, बेस का पार्ट वीक था. सो दैट्स व्हाई ये जो सॉल्यूशन की पीएच बनेगी या तो नेचर बनेगा वो
एसिडिक इन नेचर ही बनना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ salt is strong acid part. Okay, so here this Cu, that means जो weak base का part था, it hydrolyzed or it undergo hydrolysis with the water and produce CuOH by 2 with the hydronium ion. Hydronium ion formation takes place in the form of product. That means in solution, concentration of hydronium ion is increases than the concentration of OH minus ion. So the solution become in acidic in nature. Now this CuOH by 2, जो कि ये रिएक्शन में तैयार हुआ था ना यहाँ पे, in this case here CuOH by 2 जो तैयार हुआ है, this is obtained in the form of turbidity, in the form of precipitate. Now ये जो precipitate है, because of that precipitate solution become turbid in nature. Okay, now see here, due to presence of excess of H2O positive ion, the solution of CuSO4 become acidic in nature and turns blue litmus paper into red. बराबर, अगर ये सॉल्यूशन में आप ब्लू लिटमस पेपर को डीप करते हो तो इट टर्न्स एंड प्रोड्यूस रेड कलर. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ H3O पॉजिटिव आयन. H3O पॉजिटिव आयन मतलब क्या, हाइड्रोनियम आयन. ओके, now this CuOH by 2 is obtained in the form of PPT, that means called as the, which is sparingly soluble and which becomes solution of CuSO4 turbid. Turbid in the sense जैसे precipitate type of clear solution नहीं रहता है, clear solution नहीं दिखता है. clear solution में जैसे water ले लो, क्या दिखता है, आजू यहाँ से देखते हो ग्लास में से, ग्लास बीकर ले लो तो सामने से देखते हो तो आगे का भी दिखता है. टर्बिडिटी अगर रहे तो वो नहीं दिखता है कुछ, मतलब ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं रहता है. सो उसको क्लियर बनाने के लिए क्या करेंगे, CuOH by 2 टर्बिडिटी तैयार कर रहे हैं ना, तो उसको क्लियर सॉल्यूशन बनाने के लिए वी हैव टू ऐड H2SO4. ठीक है, सो टू गेट अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 द एडिशन ऑफ H2SO4 वुड बी रिक्वायर्ड. थोड़ा सा H2SO4 ऐड करते हो तो जो टर्बिडिटी होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी. ओके, turbidity dissolve हो जाएगी and we get a clear liquid. So in this part or in this type of salt, the Cu2 plus ion, that means ion from the weak base, shows hydrolysis. It combines with the ions of water and produce CuOH by 2 with hydronium ion. So because of that excess of presence of hydronium ion, the nature of solution become acidic in nature, and in that case if we use the litmus paper, the blue litmus paper turns red. ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि why in CuOH, why in the salt of strong acid and weak base the addition of H2SO4 required. तो किसके लिए रिक्वायर है वो एडिशन ऑफ H2SO4, द CuOH by 2 जैसे तैयार होता है वो क्या है, which is sparingly soluble in the solution. sparingly soluble मतलब क्या, थोड़ा सा soluble है, मतलब large amount insoluble form में होगा, and because of that insoluble nature it shows the turbidity, and to get a clear solution we have to add H2SO4, concentrated H2SO4. Okay, so this is the second case, salt, second case of salt. Now then third case or third type of salt, salts of weak acid and weak base. salts of weak acid and weak base. इसके पहले क्या था, salt था strong acid and weak base. अब यहाँ पे acid हो गया weak और base हो गया strong. अब जैसे कि मैंने आपको हिंट दी थी कि स्टार्टिंग में ही हम लोग बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन कौन सा नेचर शो करेगा और कौन सी पीएच शो करेगा और किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा. इसके पहले के सॉल्ट में हम लोगों ने देखा था कि एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट. तो स्ट्रॉन्ग था तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन किसका बड़ा था, हाइड्रोनियम आयन का. नाउ इन दैट केस स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस मतलब क्या, is the solution become basic in nature. देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है. Let's see. Now the example of this salt is sodium acetate, right? CH3COONA, sodium acetate, which is obtained by using weak acid. Which acid?
acetic acid and strong base. Which base? NaOH. CH3COH, that means acetic acid और NaOH को react करते हो तो we get this salt CH3CONa. Now this is the salt. ठीक है. Whenever it is added in a water, it dissociates completely because of one of the part is strong ना. So it dissociates completely. किसमें convert हो जाएंगे वो? Acetate anion with Na plus ion. Acetate anion with Na plus ion. Now in next step क्या होता है? The ions of salt को हम लोग react करते किसके साथ? Water के साथ. Now tell me, in between these two ions, acetate anion and Na plus ion, which ion reacts with water? अब Na प्लस को हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पार्ट में. मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एज वी नो स्ट्रॉन्ग बेस अगर वाटर के साथ मतलब स्ट्रॉन्ग आयन अगर वाटर के साथ कंबाइन होता है तो फिर से वो NaOH तैयार करेगा ये, और NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस तो फिर से किस कन्वर्ट कर हो जाएगा आयंस के फॉर्म में बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस आर डिसोसिएट्स कंप्लीटली. सो रिवर्स बैक होके इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स Na प्लस आयन क्या करता है? Having a no tendency to react with the water because of NaOH is a strong electrolyte. Understood? That means Na plus ion of salt have no tendency to react with the water because NaOH is a strong electrolyte. वो तैयार भी हो जाए तो भी क्या होता है? वो फिर से for reversible reaction शो करके convert it into ions. अब बचा कौन है? Acetate anion. And acetate anion is the part of weak acid, or as we know weak part shows hydrolysis, it combines with the water, right? The acetate ion of salt reacts with the hydronium ion from the water, form unionized acetic acid. See here, this acetate anion reacts with water, बराबर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे. क्या होगा यहाँ पे? यहाँ से H प्लस यहाँ से H प्लस कहाँ पे जाके अटैच होगा? O निगेटिव के साथ. एंड वी गेट दिस एसिटिक एसिड विथ OH माइनस आयन. यहाँ पे OH माइनस आयन प्रोडक्ट में तैयार हो रहा है. मतलब क्या है? हाइड्रोनियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. नाउ सी हियर, दिस इज द acetate anion reacts with the ions of water, produce acetic acid. As we know, acetic acid is a weak acid. और acetic acid weak acid होने के कारण ये डिसोसिएट होता है क्या? इजीली बहुत कम डिसोसिएट होता है. NaOH HCl के जैसा 100% डिसोसिएट नहीं होता है. इट डिसोसिएट्स वेरी पार्शियली, वेरी स्लाइटली. मतलब जितने स्पीड से ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतने स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है क्या? नहीं हो रही. फॉरवर्ड रिएक्शन इज द 99%. मतलब acetate anion converted into acetic acid, but the backward reaction is only 1%. मतलब acetate ion converted into acetate anion ये जो होगा वो सिर्फ 1% possibility होने की. That means this acetate anion combined with the ion of water, so it shows hydrolysis, and because of this showing the concentration of hydroxide ion is increases in solution. कारण तो प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट में अपने को मिल रहा है, OH माइनस आयन अपने को प्रोडक्ट में मिल रहा है ना. So because of that the concentration of hydronium ion is decreases and the concentration of hydroxide ion is increases, and if the concentration of hydroxide ion is increases the solution become basic in nature. सॉल्यूशन क्या रहेगा? बेसिक इन नेचर. और ये हम लोग ऊपर भी देख सकते थे, पहले हम लोग स्टार्ट में बता सकते थे कि वेदर द सॉल्यूशन शोज बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर. कैसे? because of part of strong base and weak acid. Because of salt is the combination of weak acid and strong base. जो strong base का जो strong part रहेगा उसके हिसाब से उसका नेचर बनेगा सॉल्यूशन का. Understood? Now see, thus the hydrolytic equation is sodium acetate reacts with the water. क्या बनेगा? CH3COH. That means CH3COH plus Na plus OH minus ion. मतलब ये क्या होगा? आयोनाइज फॉर्म में होगा और ये O निगेटिव और ये Na पॉजिटिव.
Na पॉजिटिव वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं होता है, अगर होता भी है तो फिर से वो Na प्लस और OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ दिस O नेगेटिव आयन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, H प्लस के साथ. वी गेट दिस एसिटिक एसिड और ये OH माइनस आयन. ओके, सो एज इट प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन, ये जो एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन जो है प्रोडक्ट स्ट्रीम में अपने को मिल रहा है. द सोल्यूशन ऑफ सच सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर. सोडियम एसिटेट का जो सॉल्ट का सॉल्यूशन रहेगा वो बेसिक इन नेचर रहेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिक इन नेचर, इफ वी यूज रेड लिटमस पेपर एंड इट इज डीप इनटू द सॉल्यूशन, सो इट टर्न्स इनटू ए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट, दैट मीन्स सॉल्ट फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस. अब ये जो सेकंड और थर्ड में केस में वीक कंपोनेंट शो करता था हाइड्रोलिसिस, एक कंपोनेंट जो वीक था वो शो करता था हाइड्रोलिसिस. फर्स्ट इसमें तो कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं था. एंड फोर्थ इसमें देखते हैं हम लोग कि कौन कौन शो करता है हाइड्रोलिसिस. नाउ द fourth type of salt is salts of weak acid and weak base. Now in this case both components are weak in nature. एसिड का पार्ट भी वीक है और बेस का पार्ट भी वीक है. मतलब क्या है, बोथ आर द वीक इन नेचर, दैट मीन्स बोथ आयंस shows hydrolysis. Both ions reacts with the ions of water. Now consider Ba is the salt. Ba, this is not a bachelor of art. This is considered as a Ba as a salt. अब किसका सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस का. वीक एसिड मतलब कौन सा एसिड, HA, उसको एज ए जनरल नोटेशन है HA. ठीक है, HA जनरल नोटेशन है HA. और वीक बेस BOH जनरल नोटेशन BOH, नॉट बोरॉन हाइड्रोक्साइड. नहीं तो बोलोगे आप लोग बोरॉन हाइड्रोक्साइड है. इस HA and BOH अगर रिएक्शन होती है तो क्या तैयार होगा, ये Ba और ये H2O, तो ये अपने को Ba मिला है, राइट. सो दिस इज एज अ सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट है, वीक एसिड एंड वीक बेस का. दैट मीन्स वीक एसिड इज HA एंड वीक बेस इज BOH. नाउ इट डिसोसिएट्स, करो उसको डिसोसिएट, तो वो डिसोसिएट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ B प्लस एंड A माइनस, इन द फॉर्म ऑफ B प्लस एंड A माइनस. नाउ वाटर का डिसोसिएशन कैसा होता है, H plus and OH minus ion में. And as we know, if the part of salt is weak, then it combines with the ions of water. So that means both parts, that means B plus and A minus ion, both ions from the weak acid and weak base, so both ions combines with the ions of water. So the hydrolysis reaction क्या होगी, in that both ions of salt reacts with the ions of water. So B plus and A minus ion reacts with the water. क्या तैयार होगा, ये B plus किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ, और ये H plus A minus के साथ. So we get this BOH and HA, weak acid and weak base. Both are the weak acid and weak base. Now in this reaction, whenever this B plus and A minus ion reacts with the water to produce BOH and HA. अब यहाँ पे कोई OH माइनस आयन और H3O पॉजिटिव आयन तैयार हो रहा है क्या प्रोडक्ट स्ट्रीम में, जैसे पहले दूसरे और तीसरे केस में हुआ था, सेकंड टाइप में और थर्ड टाइप में जैसे हम लोगों ने देखा था, वैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट में OH माइनस आयन और H3O पॉजिटिव आयन तैयार हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. ओनली BOH और HA ही तैयार हो रहा है, BOH और HA तैयार हो रहा है. दैट मीन्स H3O पॉजिटिव एंड OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम, वो चेंज नहीं हो रहा है. There is no any change occur in the concentration of OH minus and H2O positive ion. That means the nature of solution in this type of salt, the nature of solution is neutral in nature. Correct? क्या रहेगा यहाँ पे, solution का nature neutral रहेगा, because in this reaction there is no ion is obtained. कौन सा ion, H3O positive and OH minus ion. Now see here, for example, ये जनरल नोटेशन हम लोगों ने लिखा था. अभी एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कौन सा, कंसिडर द एग्जांपल इज अमोनियम एसिटेट. बोथ आर द वीक. अमोनियम एसिटेट, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये होगा एसिटिक एसिड.
both are weak acid and weak base. Now it is combined with the water. इसके आयंस वाटर के साथ कंबाइन करो, क्या तैयार करेंगे? एसिटिक एसिड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बोथ आर वीक एसिड। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जा ही नहीं सकते आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पे कोई H3O पॉजिटिव एंड OH माइनस आयन तैयार नहीं हो रहा है। सो द pH ऑफ सॉल्यूशन रिमेन न्यूट्रल इन नेचर। और अगर pH न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा, तो सॉल्यूशन भी न्यूट्रल रहेगा। सो हेंस द सॉल्यूशन में टर्न्स out acidic, basic or neutral depending on the relative strength of weak base and weak acid formed in the hydrolysis reaction. Okay, मतलब whether the solution become acidic in nature or basic in nature, हाँ किस पर डिपेंड करता है ये? It depends on the strength of weak acid and strength of weak base which is formed in the hydrolysis reaction. This is obtained in the hydrolysis reaction. So this type also shows the hydrolysis, but the nature of solution remain in neutral form. That means the concentration of H3O positive and the concentration of OH minus ion remains same, because there is no formation of H3O positive and OH minus ion takes place in the hydrolysis reaction. In the hydrolysis reaction, and hydrolysis reaction means this reaction. Understood students? I hope सबको समझ में आया होगा. So क्या देखा हम लोगों ने आज? In first case, salt of strong acid and strong base. In that case, both components in salt NaCl, both components are from strong acid and strong base. So that means whenever these ions of salt and ions of base salts, means ions of salt combines with the ions of water, it produces both strong acid and strong base, and because of strongest nature, it ionizes or it dissociates completely, reverse back. So that's why this reaction does not show any type of hydrolysis, and the concentration of OH minus ion and the concentration of H3O positive ion remains same. It is not disturbed. So that's why the solution remains neutral in nature. In second case, salt of strong acid and weak base. Strong acid है मतलब concentration of hydronium ion increased होगा, ठीक है? हम लोग अब इतना बड़ा प्रूव करते देख, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग इतना सारा थोड़ा लिखते बैठोगे, वहीं पे देखने का कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। एसिड का स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो एसिडिक इन नेचर रहेगा, वीक का स्ट्रॉन्ग बेस का स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो बेसिक इन नेचर रहेगा, वहीं पे देखने का क्वेश्चन एग्जाम्पल में। ओके, सो CuSO4 लिया था हम लोगों ने एग्जाम्पल एज अ सॉल्ट ऑफ strong acid and weak base. H2SO4 is a strong acid and CuOH2 is a weak base. Now whenever it is dissolved, it dissociates completely. SO4 2 minus does not show any hydrolysis because it is a strong acid, it produces strong acid and strong acid dissociates completely, reverse back. But the Cu2 positive, Cu di positive ion shows hydrolysis. It is combined with water, and water के साथ जैसे वो combine होता है, it produces cupric hydroxide or copper hydroxide with hydronium ion, and hydronium ion concentration is here increases than the OH minus ion. So the nature of solution become acidic in nature. The CuOH2 is turbid, is insoluble in water, insoluble in solution, so that's why it shows turbidity. To remove the turbidity, we have to add H2SO4. In third case, salt of weak acid and weak base, salt of weak acid and strong base. अब base कौन सा है? Strong है, so that's why यहाँ पे OH minus ion का concentration ज़्यादा होगा in this solution, and if the concentration of OH minus ion is increases, that means the concentration of OH minus ion increases. That means the solution become basic in nature. Okay, so example is sodium acetate. Sodium acetate is undergo hydrolysis, is undergo dissociation, produces acetate anion with Na plus. Na plus is the part of strong base, so it does not combine with the ion of water. And बचा कौन सा है फिर? Acetate anion. So acetate anion क्या करेगा? वाटर के साथ कंबाइन होके प्रोड्यूस एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, सो ये रिवर्स बैक नहीं आएगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही रहेगी. सो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड तैयार हो रहा है, राइट, विद द OH माइनस आयन, एंड OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गया. सो द नेचर ऑफ सॉल्यूशन बिकम बेसिक इन नेचर. Okay, and in fourth case, salt of weak acid and weak base, both are weak in nature, so that's why both ions of salt combines with the ions of water and produce weak base and weak acid.
ओनली एसिड और बेस तैयार हो रहा है, दैट मीन्स एंड OH माइनस आयन एंड OH CO पॉजिटिव आयंस कुछ भी तैयार नहीं हो रहे, दैट मीन्स द सॉल्यूशन remain in neutral form. Okay, so this is all about the hydrolysis of salt. This is very important topic in board point of view as well as in JEE, NEET, CET point of view. Okay, this is very important. In next lecture, we will discuss about the different salts of weak acid and weak base on the basis of dissociation constant of weak acid and dissociation constant of weak base. Okay, so till then, stay safe, stay at home. Okay, student, bye and thank you.